السلام علیکم، آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید۔ میں اس وقت موجود ہوں مزار شریف افغانستان میں، اور آج آپ کے لیے ہم سینٹر سٹیج کا ایک بڑا خصوصی پروگرام لے کر آ رہے ہیں۔ یہ پروگرام افغان امن عمل کے حوالے سے ہے، جو اس وقت اپنے حتمی مراحل کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ اس امن عمل کے حوالے سے بہت سارے سوالات ہیں جو جڑے ہیں، اور انہی کا جواب لینے کے لیے آج میں مزار شریف افغانستان میں موجود ہوں۔ مزار شریف کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ افغانستان کا بہت ہی اہم شہر ہے، چوتھا بڑا شہر ہے، اور یہ صوبہ بلخ میں واقع ہے۔ یہ اسے گیٹ وے ٹو سینٹرل ایشیا بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں سے تاجکستان اور ازبکستان کا جو بارڈر ہے وہ بالکل نزدیک ہے، اور یہی وہ راستہ ہے جو استعمال کیا جاتا ہے افغانستان سے سینٹرل ایشیا جانے کے لیے۔ اس امن عمل پر جو ہے وہ اب سب کی نظریں جڑی ہیں۔ پاکستان، امریکہ، چائنا، ترکی، روس، یورپ کے جتنے ممالک ہیں، سب کے سب اس امن عمل کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ پہلا مرحلہ جو ہے وہ دوحہ میں ہوا تھا، اس کے بعد جو ہے وہ پھر انٹرا افغان مذاکرات شروع ہوئے، اور اب استنبول کانفرنس کی طرف جبکہ یہ سارا جو ہے وہ پروسیس بڑھ رہا ہے، تو اس امن عمل پر جو امیدیں ہیں، جو توقعات ہیں، وہ بھی بہت زیادہ جو ہے وہ جڑ گئی ہیں کہ کیا افغانستان کے اندر جو ہے وہ پھر اس امن عمل کے مکمل ہونے کے بعد اسٹیبلٹی آ سکتی ہے یا نہیں۔ جو مزار شریف کی اہمیت ہے، اس حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ ایک تو یہ تاریخی طور پر جو ہے وہ یہ شہر بہت اہمیت کا حامل رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ اس کی سینٹرل ایشیا کا، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ بالکل اس کے ساتھ واقع ہے، تو جب سوویت فورسز جب یہاں پر تھیں تو اس وقت بھی جو ہے وہ شہر کو بہت زیادہ اہمیت حاصل تھی۔ پھر 90 کی دہائی میں یہاں پر جو ہے وہ بہت زیادہ لڑائی ہوتی رہی ہے۔ اس لڑائی میں جو ہے وہ بہت اہم فگرز جو ہے وہ یہاں سے جو ہے وہ ایمرج ہوتے رہے ہیں۔ ایک تو رشید دوستم جنبش ملی جن کی پارٹی تھی، وہ افغانستان کے ابھی نائب صدر بھی جو ہے وہ رہے، ان کا کردار جو ہے وہ بڑا اہم رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں کے جو گورنر ہیں عطا محمد، ان کا بھی جو ہے وہ بہت اہم، ان کو جو ہے وہ کردار جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے افغانستان کی سیاست کے حوالے سے۔ تو اس علاقے کی جو اہمیت ہے وہ بہت زیادہ رہی ہے۔ پاکستان کے حوالے سے بھی اس امن عمل سے بہت سارے سوالات ہیں۔ یہاں پر لوگ جو ہے وہ اس امن عمل کو جو ہے وہ پاکستان کے کردار کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، پاکستان سے کیا چاہتے ہیں۔ جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان بد اعتمادی کی بات ہوتی رہی ہے، آخر وہ جو ہے وہ کچھ کم ہو سکے گی یا نہیں، یہ وہ تمام چیزیں جن پر آج کے پروگرام میں جو ہے وہ بات ہوگی۔ مزار شریف سے آج ہم آپ کے لیے پروگرام لے کر آ رہے ہیں۔ یہاں پر جو پاکستانی کچھ وزٹ کے لیے آئے ہوئے ان سے بھی بات ہوگی، یہاں کے جو لوگ ہیں ان سے بھی جو ہے وہ، سیاستدانوں سے بھی جو ہے وہ ہم بات کریں گے، اور پوچھیں گے کہ کیا افغان امن عمل کامیاب ہوگا یا نہیں۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں چیئرمین ہائی کونسل فار نیشنل ریکنسیلیشن ایکسیلنسی عبداللہ صاحب۔ عبداللہ صاحب، thank you so much for your time, for talking to us. As a peace officer in charge, everyone is talking about the Afghan peace process. What expectations do you have of this process, and how do you think that this is this headed in the right direction? Thank you. And I repeat myself saying that Afghanistan, our people have suffered so much in the past 42 years. And there is no higher priority for our people than peaceful settlement. And I'm also a firm believer that there is no winner through war, in continuation of the war. And there are no losers through peaceful settlement, inclusive peaceful settlement. The opportunity is there. How much it's real, it will depend on both sides. Islamic Republic of Afghanistan, which I can assure our people and also our brotherly nation of Islamic Republic of Pakistan that we have done our best and we will continue to do our best to materialize it. But it takes both sides. I'm not disappointed, but I see the need for urgency. That's what the people of Afghanistan expect us. That's what the rest of the world, those who are helping us and supporting us, is expecting. And it depends on both sides, realizing that there is no military solution for the situation. Abdullah, how do you see, since the process is moving in phases? So there was the first phase with we saw the Doha agreement, then intra-Afghan dialogue, and now you are headed into a phase where this dialogue will go to Istanbul.
In every process, there are hopes and expectations and there are outcomes. Are you satisfied with the outcomes so far? And what expectations do you have of Istanbul? The fact that negotiations started after so many years of war, that in itself was a good news and an important opportunity. With the pace of the progress, no. Neither me nor the people of Afghanistan are satisfied. We should have utilized the time available for us in a better way. The Doha process will continue. The negotiating team will have its role. But recently there was an idea that if we move it to the next level, in order for the process to be re-energized by the top leaders of the country in an inclusive team, in a different venue, that does not mean that Doha will stop. In Doha process will stop. We need support of all of the countries and also every ways and means to try to help it. All right. And how do you see Pakistan's role in this process? Pakistan, as an important neighborly country for Afghanistan, has played its role. We need Pakistan's voices in consistent support for the peaceful settlement, and the Taliban should hear from all countries, including the Islamic Republic of Pakistan, that continuation of the war doesn't have any support anywhere in the world. And the focus of this peace process, there has been a lot of talk about what will happen after the peace process concludes. So how do you see a relationship between Pakistan and Afghanistan right now, during where the process is going on, and then after the peace process? Well, the relations should move towards further strengthening at any situations. That depends on both countries, both governments, and both peoples. And I see progress. At the same time, when it comes to the post-peace situation, I can see only opportunities for all countries around Afghanistan and beyond. Right, and a major focus of Pakistan has been on establishing more relations with regards to where economies come close to each other. So what potential do you see between Pakistan and Afghanistan once this peace process is completed between the two countries? No, the foundation has been laid, and even during the visit of this delegation from Track 2, distinguished members of Track 2, they described the progress which is there, the work which is needed, and the potentials are enormous for both countries and both nations. And lastly, Excellency, a major issue in this relationship has been mistrust. Where do you see this trust factor right now, and where do you want it to be? Still, even earlier when you talked about the media, the way that things are related to, that perhaps needs more work. But at the same time, I visited Pakistan. During my visit, I had the unique opportunity to talk about all aspects of relations and also further it. And I'm also grateful to the government of Pakistan and to the National Assembly of Pakistan for the steps that they have taken in regards to facilitations of visa, trade, and transit, and all of that. But we need to continue to work together. And I wouldn't say that now there is no mistrust. Right. That's we need to focus, but that takes both sides in equal term. All right. Thank you so much, Abdullah. Okay. Thank you for your time.
मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड आसिफ यासीन साहब और डॉक्टर शुएब सडल साहब। आसिफ यासीन साहब सेक्रेटरी डिफेंस भी रह चुके हैं, शुएब सडल साहब जो है वो IB को भी हेड कर चुके हैं, मुहतसिब भी रह चुके हैं। मैं ज़रा इस जो अमन अमल है इस हवाले से इन दोनों से ज़रा बात करना चाहता हूँ, और क्योंकि ये लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं अफगानिस्तान के अंदर, तो ये इस सारे प्रोसेस को और फिर जो रिस्पॉन्स मिल रहा है उसको किस तरह से देख रहे हैं। जनरल साहब, कुछ लाइन्स ज़ाहिर बात है जहाँ पर दुनिया की बात आती है, कुछ लाइन्स उसमें हमारी स्टेक्स भी हैं और कुछ हमारी लाइन हैं जो कि जिनके हवाले से हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं या ख़दशात हैं, जिसमें कुछ पीस प्रोसेस के हवाले से भी, कुछ इस प्रोसेस के बाद की भी हैं। आपको लगता है कि क्या यहाँ पे जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो उसके लिए तैयार होगी? शुड पाकिस्तान भी होपफुल कि वो जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं इंडिया के हवाले से, बॉर्डर के हवाले से, क्रॉस बॉर्डर क्रॉसिंग्स के हवाले से, उसमें जो है वो कुछ तब्दीली आ सकती है अगर ये पीस प्रोसेस कामयाब हो जाता है? देखिए, उसमें अफ़गानिस्तान को मेरे ख़्याल में ये सोचना पड़ेगा कि ऐसा करने से अफ़गान सॉइल को या अफ़गान सरज़मीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने से फ़ायदा किसको हो रहा है। अगर अफ़गानिस्तान को हो रहा है तो शायद वो करेंगे, और अगर पाकिस्तान को किसी और को हो रहा है तो वो नहीं करेंगे। पक्की बात यह है कि अफ़गान सॉइल को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने से अफ़गानों को कोई फ़ायदा नहीं होगा, फ़ायदा किसी तीसरे मुल्क को या चौथे मुल्क को होगा। ये रियलाइजेशन अगर होगी तो ये शायद ऐसा ना हो, और उसके लिए मेरे व्यू एक और भी है कि अब एक जनरेशनल चेंज आ गया है अफ़गानिस्तान में, एक नई जनरेशन आ गई है, और ये ना सिर्फ हुकूमती सर्कल्स में आई है, तालिबान के अंदर भी अगर आप देखें तो ये वो जो मुजाहिदीन या वो जो अर्ली एरा के लोग थे वो पुराने थे। अब एक नई जनरेशन है जो ज़्यादा प्रैग्मेटिक है, जो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है। और एक ज़रूरी चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा पीस प्रोसेस में के लिए जो कैटलिस्ट रही है वो ये रही है कि मेरे ख्याल में दोनों तरफ से ये एहसास हो गया है, तालिबान भी और अफ़गान हुकूमत भी, कि अफ़गानिस्तान ने जो एक मज़ा या एक टेस्ट की है डेमोक्रेसी, फ्रीडम, जिसके अंदर औरतों की तालीम, मीडिया और बाकी चीज़ें सारी शामिल थीं, वो अब इर्रिवर्सिबल हो गई हैं। तो अगर नई डिस्पेंसेशन ये सोचेगी तो वो कहीं नहीं पहुंचेगी। और फाइनल चीज़ ये है कि ये जो अमेरिका और बाकी नेटो वगैरह यहाँ से विड्रॉ कर रहे हैं, ये तकरीबन $1 ट्रिलियन खर्च करके 12 साल में कई हज़ार कैजुअल्टी सफ़र करके तो वेयर आउट हो गई हैं ये फोर्सेस। अब इनके लिए कोई चॉइस नहीं रही यहाँ रहने की, और वो सही तौर पर वो यहाँ से इनखला कर। उसके बाद हमें जो है वो साथ ही, ज़ाहिर बात है हम तो नहीं जा सकते, वो तो जा सकते हैं, मगर हमें इनके साथ ही रहना है। डॉक्टर साहब, हमारी एक बड़ी थीम है और जो कि अभी इस वक्त पाकिस्तान में भी जिस पे बहुत ज़्यादा बात हो रही है वो कनेक्टिविटी के हवाले से हो रही है। इसको कई दफ़ा अफ़गानिस्तान की बात आती है, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट जो पाकिस्तान सेंट्रल एशिया के हवाले से हो सकते हैं वो भी अफ़गानिस्तान की वजह से रुक जाते हैं। पीस प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद स्टेबिलिटी अगर यहाँ पर आती है तो क्या आपको लगता है कि ये काम आसान होगा कनेक्टिविटी वाला, या इसमें भी आपको जो है वो चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं? जैसा से जनरल साहब ने बात की कि भाई ये तो कहीं ना कहीं पर हमें ये जो रियलाइज़ तो करना होगा यहाँ की लीडरशिप को। नहीं, चैलेंजेस तो रहेंगे और देयर आर ह्यूज चैलेंजेस। ये कहना कि जी ये आसान हो जाएगा, ऐसे नहीं होने वाला। लेकिन एट द सेम टाइम जो पहले बात हो रही थी बॉर्डर की, आपने इशू रेज किया था। अब बॉर्डर में देखें ना, एक तरफ जो नई डायमेंशन आई है वो है ये जो फेंसिंग है, तो more than 80% is already complete. Remaining is will also be completed, I hope soon. तो एक तो ये जो एलिगेशन था हमारे ऊपर और जो सारी आर्गुमेंट थी कि जी आप बेचते हैं, तो उसको तो हमने काउंटर काफ़ी हद तक अब कर लिया है कि भाई हम बेचते थे तो पहले आप रोक नहीं सकते थे, अब तो बॉर्डर है, तो फेंस है, और उस फेंस को और फेंस हमने अपनी तरफ लगा लिया है, आप उसको अलाउ नहीं भी कर रहे थे तब भी हो गया वो। तो इससे भी जो सस्टेनेबिलिटी है उस पर असर पड़ेगा। और बाकी ये जो फॉरेन या एक्सटर्नल एक्टर्स हैं इसमें इन्वॉल्व, पर्टिकुलरली जब इंडिया की हम बात करते हैं, तो उनके लिए भी वो पहले वाली फ्रीडम ऑफ एक्शन नहीं है अब, क्योंकि लोग तो हमारे इस्तेमाल होते थे ना,
चाहे वो विदन है या इधर आके बैठ जाते थे तो उनको ये अपनी तरफ लगा लेते थे. So I think things are looking pretty rosier. वो पहले वाली बात नहीं है. तो बाकी तो उम्मीद से दुनिया कायम है, हमें उम्मीद रखनी चाहिए. एक और कोशिश सही. और जो एक और बात है वो ये जो हमारा सिविल सोसाइटी की इन्वॉल्वमेंट है, जिसमें मीडिया भी है, जिसमें जिस एफर्ट में हम लगे हुए हैं, और हमारा तो पर्सनल एक्सपीरियंस है ना ये कि कई सालों से इधर आ रहे हैं कि दिस टाइम द विजिट इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट. बहुत मुख्तलिफ है, पहले से मुख्तलिफ है सर. देखिए कनेक्टिविटी का जो इस वक्त जो मेरे ख्याल में जो मुझे यहाँ फील हुआ है वो एक क्रिटिकल फैक्टर जो है ना वो शिफ्ट फ्रॉम जियो स्ट्रैटेजी, जियो सिक्योरिटी से जियो इकोनॉमिक्स है. इकोनॉमिक्स जो है ये आज इंटरेस्ट ड्रिवन पॉलिसीज़ के ऊपर है और इनको अब नज़र आ रहा है कि जो कनेक्टिविटी है वो इनके लिए भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाएगी. और जैसे कहते हैं ना मनी मेक्स द मेयर मूव, दैट इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन. इन्होंने आपने देखा होगा हर किसी ने यहाँ पर कहा है कि हमें ट्रेड करने दें, हमें ट्रांजिट करने दें, हमारे कंटेनर्स को आने दें. सो एम्फसिस इस दफ़ा सिक्योरिटी पर नहीं था, इस दफ़ा सारा एम्फसिस जो था वो इकोनॉमिक्स के ऊपर था और इसलिए वो चीज़ें होगा पीस प्रोसेस के बाद बहुत इम्पोर्टेंट. बहुत शुक्रिया जनरल आसिफ यासीन साहब. शोएब सरल साहब, थैंक यू सो मच. मेरे साथ इस वक्त मौजूद है स्पेशल एनवॉय फॉर पाकिस्तान अफेयर्स मोहम्मद दाऊद ज़ई साहब. उनसे बात करते हैं ये पीस प्रोसेस के हवाले से. एक्सेलेंसी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. प्लेजर. Just tell me that what are Afghanistan's expectations of this entire process that is going on, and how do you see Pakistan's role in it? Well, the most important area of focus between Afghanistan and Pakistan is peace and reconciliation in Afghanistan. And in that respect, Afghanistan has expectations from Pakistan to use the influence over Taliban to consistently come to negotiating table and also to follow negotiations on a result base. That's one. The other thing that we expect Pakistan is that again to use the influence over Taliban to agree to a ceasefire. Okay. Because every day Afghans are losing their lives. And then the third one is which is both countries are doing well, is to have coordination and collaboration in fighting terrorism. There is a lot of hope about this process. I know there has been major peace pushes before that as well. But why do you think that this time, this peace push is different than what was done before? It's different because the animosity between Taliban and Americans are over. Okay. Now, Taliban used to say, they claim that Afghanistan is occupied by the US and as long as it continues, we will fight. Okay. Now they have signed an agreement in February last year in Doha, which means their problem is over, they have overcome their problem. And now they have continued to fight against the Afghan government forces. Now, that agreement between Taliban and US was, there was a serious Pakistan cooperation with that. And the US thanked Pakistan. Now we, as their brothers and sisters, we expect Pakistan to do the same between the Afghan Republic and the Taliban. Now they said there are a lot of apprehensions from Pakistan as well, especially in the peace process, that there are no spoilers and then there is no scapegoating. But then also for the phase after the peace process, where Pakistan and Afghanistan will have to deal with each other. So do you think that both countries can come together and deal with these challenges on their own, irrespective of the world community or involvement of China, US, Turkey, European Union, etc.? But since 2018, we have developed a framework which we call it APUPS, and then recently we agreed on shared vision document between the two countries, which is specifying 5 areas of cooperation. Now, the first one is
state-to-state relationship, strengthening state-to-state friendship and cooperation. The second one is Pakistan's cooperation with the peace process. The third one is trade in transit, and the fourth one is giant counterterrorism, and the fifth one is refugee return. So this time we have agreed on a framework which only one of the 5 items are cooperation of Pakistan to the peace process. That means we are looking for long-term cooperation. All right, lastly, Pakistan has been focusing a lot on connectivity. A major project like China-Pakistan Economic Corridor is ongoing, and there are a lot of expectations from Pakistan side. And there has been some talk about connectivity to Central Asia through Afghanistan. Do you think that Afghanistan, in a post-peace agreement process or phase, Afghanistan will facilitate that, and Afghanistan will open gateways to Central Asia, especially for Pakistan? We are already doing that, maybe not full, but to a large extent we are doing it. This meeting you are witness that Pakistani side was complaining that their items to Central Asia, the Afghanistan window is 5 days and it's short. That means there are goods going to Central Asia, and Pakistan is buying or will be buying energy from Central Asia. But in return, we expect Pakistan to allow us full access to India through water. Now, that's being discussed. I'm not saying that they are not giving to us. We are discussing, we are in the middle of a process that we get full access to India and Pakistan get full access to Central Asia. Is the trust improving that you see with the special ambassadors, envoys coming in and with the peace process between the two countries? A new game is shaped, but it's not yet changed. Soon it will be changed. It is yet to finish. It's yet to finish. All right. Thank you so much, Excellency. Thank you so much for your time. मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान की 2 मेंबरान पार्लियामेंट, और ये लोग भी जो है वो अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, और इनसे ज़रा बात करते हैं कि एक तो ये कि अफ़गान अमन अमल के हवाले से इन्होंने यहाँ पर जो है वो क्या देखा, और दूसरा ये कि ख़ास तौर पर ख़वातीन के हवाले से बहुत अहम सवाल रहा है पूरे प्रोसेस के अंदर कि ख़वातीन का किरदार अभी क्या है और आगे क्या होने वाला है। तो इन दोनों हवाले से बात करते हैं। शंदान गुलजार साहिबा MNA हैं, नफीसा खटक साहिबा MNA हैं, मेंबर कौमी असेंबली। बहुत शुक्रिया जी आप दोनों का। जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, रिस्पांस आपको क्या मिला है इस प्रोसेस के हवाले से, और ख़ास तौर पर आपका ये विज़िट और इन लोगों का वहाँ पे जाना, जो परसेप्शन है वो क्या कुछ बदल रही है अभी, स्पेशली ये जब प्रोसेस चल रहा है? देखिए, परसेप्शन हमेशा हक़ाइक़ पे मबनी होते हैं तो वो बदलते हैं। कभी कभी हो जाता है कि वो परसेप्शंस मीडिया भी बदल देता है, लेकिन इस दफ़ा मैं खुशी से ये कह सकती हूँ क्योंकि जो पार्लियामान ने जो काम किया इन पर्टिकुलर वीज़ों पे, असद कैसर साहब स्पीकर नेशनल असेंबली ने उस काम को इनिशिएट किया, अरबाब शहजाद साहब, सादिक खान साहब और वज़ीर आज़म इंटीरियर मिनिस्ट्री के साथ मिलके, डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलके हमने अफ़गानिस्तान के लिए जो 40 साल में नहीं हो पाया, जो वीज़ा प्रोसेस चेंज किया, पर्टिकुलरली ऑन अराइवल वीज़ा बीमारों के लिए, स्टूडेंट्स का रिवाइवल, बिजनेस के लिए 5-5 साल की वीज़े, इन्वेस्टमेंट में चेंजेस, तो उसकी वजह से आई थिंक अफगानिस्तान को इकोनॉमी की चेंज से वो सिग्नल मिला। रजिस्टर हो रही है चीज़ें? एब्सोल्युटली। देखिए, ये चौथा मेरा पहला अफगान विजिट है। हम तमाम फ़िरक़ों से मिले हैं जो भी अफगान पॉलिटिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला आए थे, रहमान रहमानी साहब आए थे, हिकमत यार साहब आए थे, अहमद शाह मसूद साहब के भाई आए थे। तो हम जिनसे मिल रहे हैं, मच के इंसिडेंट के बाद इनके हेड आए थे अहले तशी के, सो उससे ये उनको लगा कि वेलकम एक ही है, हम सब बैठे हैं, जो आपका फैसला है वो हमें कबूल है। नफीसा खटक साहबा, आपकी भी यहाँ पर मुलाकातें हुई हैं, किस तरह से देख रही हैं जो ख़वातीन यहाँ पर जो हैं वो ख़ास तौर पर वो क्या फ़ील करती हैं, और जो पॉलिटिशियन हैं, जो मेंबरान पार्लियामेंट हैं, वो दोनों हवालों से, पाकिस्तान के किरदार के हवाले से और इस अमन अमल के हवाले से वो क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी अप्रोच क्या है? जी, जब हम लोगों की इनसे बात शुरू हुई तो मीटिंग्स के बाद इनका एक जुमला होता था जो हमें बहुत मोटिवेट करता था, और वो ये था कि अब हमें फ़ील हो रहा है कि आप लोग दिल से बात कर रहे हो, और आज आप जो कह रहे हो उसके ऊपर कोई मीनिंग है और इम्प्लीमेंटेशन हमें नज़र आ रही है, आपकी जुस्तजू हमें नज़र आ रही है, और अब हमारा दिल कह रहा है कि हाँ, अब जो
کوشش کر رہے ہیں, آپ دل سے اور جان سے کر رہے ہیں, اور آپ کی حکومت کی بھی ول یہاں نظر آ رہی ہے, آپ کی فورسز کی بھی ول نظر آ رہی ہے, اور آپ کے پارلیمنٹ کی, اور پیپل ٹو پیپل آلسو. اس میں آپ یقین کیجئے کہ جب ہم لوگ ان سے خواتین سے ملتے ہیں, پارلیمانی گروپس کئی دفعہ پاکستان آئے, وہاں ہماری میٹنگز ہوتی رہیں, وہ ان کو جب ہم اپنا بتاتے تھے کہ ہم بھی کرائسس سے گزرے ہیں آپ کے ساتھ ساتھ, آپ کا دو زیادہ تھا لیکن ہمارے ملک میں بھی اس کا بہت زیادہ سنگین اثر پڑا ہے, لیکن ہم نے اس کو سروائیو کیا, اور وہ اب ہمیں ایک بڑے بھائی کی طرح افغانستان کے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہم ان کے جو محرومیاں ہے, جو ان کو ڈیمیج ہوا ہے اکنامکلی اور سارا کچھ, تو اسٹرکچر میں ہر طریقے سے وہ اب ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہم ان کو ہیلپ کریں گے. اور جہاں تک تعلیم کی بات اگر ہو تو ہم لوگ اسکالرشپس کو وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ہم سے, اور ہائر ایجوکیشن میں وہ ہم سے ہیلپ کر رہے ہیں, ایگریکلچر میں وہ ہم سے ہیلپ مانگ رہے ہیں, جہاں تک ہیلتھ کی فیسلٹیز ہیں اس پہ وہ ویزے کی ہم سے مانگ رہے تھے, تو جو کہ اب تو ہو چکا ہے. بہت شکریہ نفیسہ کھٹک صاحبہ, شندان گلزار صاحبہ. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ہادی بلخوال, یہ والنٹیئر بھی ہیں, یہ افغان یوتھ نیٹ ورک جو ہے وہ اس کے پریزیڈنٹ بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں, پاکستان میں بھی کچھ ٹائم گزار چکے ہیں. ہادی, تھینک یو سو مچ. آپ کی توقعات کیا ہیں, آپ کی امیدیں کیا ہیں اب جب کہ افغان پیس پروسیس جو ہے وہ اپنے بالکل فائنل مراحل میں جو ہے وہ جا رہا ہے, تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد افغانستان کا ایک نیا فیز جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے؟ Well, if the neighbors and international community plays a good role and a positive role, of course it will give the results. But if they play as a usual role, it will be difficult to implement the peace process in Afghanistan. میں یہی کہوں گا, اگر جو ہمسائے ممالک ہیں اور جو انٹرنیشنل کمیونٹی اگر وہ لوگ اپنا ایک پازیٹیو رول ادا کریں گے تو دقیقاً وہاں پہ افغانستان پہ صلح آئے گا. اگر 90 کی دہائی کی طرح یہاں پر انٹرنیشنل کمیونٹی اور کوئی یہاں پہ تضمین موجود نہ ہو, کوئی گارنٹی موجود نہ ہو, تو مشکل ہے کہ یہاں پر صلح آئے اور یہاں پہ امن آئے. ایک اور اسٹوڈنٹ نسرین صفائی اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, پوچھتے ہیں. نسرین, جو اسٹوڈنٹس ہیں جو یہاں پر جو ابھی گریجویٹ ہو رہے ہیں آپ کی طرح لوگ, what do they want? آگے جانے کے لیے ان کو افغانستان میں کیا اپرچونیٹیز چاہیے ونس پیس اور اسٹیبلٹی جو ہے وہ ریٹرنز ٹو افغانستان یا افغانستان میں واپس آ جاتی ہے؟ کله چې دوی زده کړې کوي نو د دوی د هیله دغه ده چې دوی هسې اسنادونه لاسته راوړي, هسې بریاوې لاسته راوړي چې دلته راشي بیرته وظیفه ترلاسه کړي. داسې شاګردان هم شته چې ځي بهر ته, دوی زده کړې کوي راځي او ښه فرصتونه ورته نه دي, نو هیله دا ده چې ښه فرصتونه ورته برابر شي. میرے ساتھ اس وقت ایک اور اسٹوڈنٹ موجود ہیں, عائشہ مرادی, ان سے پوچھتے ہیں. عائشہ, مجھے بتائیے, بہت بات ہوتی رہی اباؤٹ دا وومن رول اسپیشلی پیس پروسیس میں اور پیس پروسیس کے بعد. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, آپ جیسے جو ینگسٹرز ہیں, کہ افغانستان میں جو اسپیشلی جو رول آف وومن ہے وہ پیس پروسیس کمپلیٹ ہوتا ہے, اسٹیبلٹی ہوتی ہے, اس کے بعد آپ اپنے لیے کیا رول جو ہے وہ یہاں پر کیا چاہتی کیا ہیں؟ As I know, I'm sure, for example, in my humble opinion, every single woman or girl in Afghanistan wants to, for example, have partnership in every single organization. For example, through these kinds of things, for example, through partnership, they can raise their voices and, for example, they transmit their ideas. Because I believe that every single woman or, for example, girl, inside the Afghanistan they're having miraculous ideas, but they just cannot, for example, go for them. Because we are facing with a lack of opportunities, unfortunately. All right. Thank you. میرے ساتھ اس وقت پاکستان کے 2 اور ممبران پارلیمنٹ جو ہے وہ موجود ہیں, اور گلداد صاحب یہ خیبر پختونخوا سے پہلے فاٹا ہوا کرتا تھا, ابھی خیبر پختونخوا وہاں سے MNA ہیں, اور شیخ یعقوب صاحب جو کہ ڈیرہ اسماعیل خان سے ان کا تعلق ہے, وہ دونوں جو ہے وہ یہاں پر افغانستان میں موجود ہیں. میں چاہتا ہوں ذرا ان سے بھی بات ہو جائے کہ یہ یہاں پر جو ہے وہ صورتحال کو جو ہے وہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں. گلداد صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہاں پر بارڈر کے اوپر, کیونکہ سب سے زیادہ فرق اگر افغانستان کے اندر حالات خراب بھی ہوتے ہیں تو وہ ان علاقوں کے اوپر جو ہے وہ پڑتا ہے, تو وہاں پر آپ کو کیا لگتا ہے کچھ بدلے گا
اگر یہاں پر جو ہے وہ یہ تھوڑا اسٹیبلٹی آتی ہے, یہاں پر حالات ٹھیک ہوتے ہیں؟ رحمان, اگر آپ دیکھ لیں تو افغانستان میں جب یہ حالات ٹھیک نہیں تھے تو اس کے ڈائریکٹ اثرات ہمارے اپنے جو پڑوس ہے, مطلب ایکسپارٹا سمجھو کہ اس پہ اثرات پڑتے ہیں, اور اس کا جو پورا پختونخوا ہے اور پختونخوا سے لے کے پورا پاکستان پہ اس کے منفی اثرات پڑتے ہیں. تو اس وجہ سے ہمارے لیے امن افغانستان میں بہت ضروری ہے. اچھا شیخ یعقوب صاحب, کچھ آپ کو یہاں پر جو ہے وہ چینج نظر آ رہی ہے پاکستان کے حوالے سے, جو پاکستان کا جو کردار ہے اس کے حوالے سے؟ دیکھیں, میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ اس وقت جو دنیا میں ایک تصور ہے وہ اقتصادیات کا تصور ہے, اکنامک وار ہے, اور جو ملک سٹرانگ ہے اکنامکلی وہ آگے جا رہا ہے, جو اکنامکلی سٹرانگ نہیں وہ پیچھے رہ رہا ہے. تو آج آپ نے اس دور میں آپ نے اپنے آپ کو اکنامکلی سٹرانگ کر کے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے, جب آپ دنیا میں ایک مقام بنا سکتے ہیں. ہماری ایک سٹرگل جو افغانستان کے ساتھ رہی ہے وہ امن کی رہی ہے, اور اس وقت خاص طور پہ جب سے عمران خان صاحب کی حکومت آئی ہے تو انہوں نے دن رات ایک کر کے, آپ نے دیکھا ہوگا ہماری پاک افغان کی جو کوآپریشن کمیٹی, اس نے 9 مہینے تک دن رات کام کیا. ہماری تقریباً ڈیلی ملاقاتیں ہوتی ہیں, ابھی تک ہو رہی ہیں, اور اس کا تصور یہی ہے کہ آپ افغانستان کی اہمیت کو سمجھیں. ایٹ ٹائمز افغانستان کے ساتھ ہمارا بائی لیٹرل ٹریڈ جو ہے $5 بلین تھا, پھر وہ کم ہو کے ایک توجہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ کم ہو کے کئی $100 تک آ گیا, کئی سو ملین ڈالر تک آ گیا. اب ہم نے کوشش کی ہے اس ڈیمیج کو ریپیئر کرنے کی, اور افغانستان کے ساتھ ایک اچھے تعلقات استوار کر کے, کیونکہ ہمارا مقصد ہے, اس میں ہمارا مطلب ہے, ہم افغانستان کے ساتھ ہماری تعلقات کا ہونا ہمارے لیے ضروری ہے, اس لیے کہ افغانستان ہمارا گیٹ وے ہے سینٹرل ایشین ریپبلکس کے لیے. اور جب ہم سی پیک کی بات کرتے ہیں, اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں ہمارے, تو اس وقت کارگر ثابت ہوں گے, ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے جب آپ کی ایکسیس ہوگی دنیا تک. اور افغانستان میں امن, پاکستان میں امن, افغانستان کی امن اور خوشحالی پاکستان کی امن اور خوشحالی ہے. کیا پوٹینشل کیا آپ دیکھ رہے ہیں, اگر یہ, میں اگر کا لفظ استعمال کروں, اگر یہ امن عمل کامیاب ہو جاتا ہے, کیونکہ باقی تو ملک شاید یہاں سے اپنی اپنی فورسز جو لے جائیں, لیکن پاکستان نے تو رہنا ہے, اس کے بعد پاکستان اور افغانستان کی جو تعلقات ہیں ان کی سمت کیا ہونی چاہیے, کیونکہ یہ سی پیک کے حوالے سے جو آپ نے بات کی, کیا یہاں پر آپ کو پوٹینشل نظر آ رہا ہے, یہ لوگ تیار ہیں اس کے لیے؟ آپ درمان سے دیکھیں, یہ چیزیں اکنامک ڈریون ہوتی ہیں, اور کنٹریز کے تعلقات آج کل اکنامکس کے اوپر ہوتے ہیں, اور افغانستان کو ہماری اہمیت کا پتہ ہے اور ہمیں ان کی اہمیت کا پتہ ہے. ہمیں ایک دوسرے کو شولڈر کرنا ہوگا, ہمیں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہوگا, ہمارا مستقبل اسی میں ہے. ہم ایکسیس دیں گے سینٹرل ایشین ریپبلکس کو ویا افغانستان, کیونکہ ہم شارٹیسٹ ہیں. ہماری جو بندرگاہیں ہیں ازبکستان کے لیے, تاجکستان کے لیے, کرغزستان کے لیے, قازقستان کے لیے شارٹیسٹ راؤٹنگ کے اوپر ہیں. 9 دن میں ہم کراچی پورٹ سے نکلتے ہیں, ترمز پہ پہنچ جاتے ہیں. 9 دن میں ہم کراچی پورٹ سے, پورٹ قاسم سے نکل کے ہم جو شیرخان بندر ہے تاجکستان کے, وہاں تک پہنچ جاتے ہیں. تو ہمارے لیے ایک بہت بڑی مارکیٹس ہیں جو ابھی تک ٹیپ نہیں ہوئی ہیں, ہم نے ان تک پہنچنا ہے, اور ہمارے لیے اس میں بڑا پوٹینشیل ہے. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں گورنر مزار شریف. Thank you so much, Excellency, for your time and talking to us. You are placed in North, and this city and this province is considered as a gateway to Central Asia. And there has been a lot of focus on connectivity between Pakistan and Afghanistan and Central Asia. How do you see that this thing, what's its importance after this peace process is completed or stability comes to Afghanistan? I think we are not should wait about the economical activity for peace. If we start the economical activity and commercial issue in North and all entire Afghanistan, the economical activity should be a reason, will be a reason to bring the peace. Now, as you know, the negotiation to build a railway from Mazar Sharif to Kabul and from Kabul to Peshawar to connect the Pakistan to Central Asia. It is a very big project. It is a reason to bring the peace and stability in area. And now we are a gateway from Afghanistan to the Central Asia, and gateway to Central Asia to transit the goods from the northern part of Afghanistan to Pakistan.
Another important project that's also from Pakistan's point of view is a Pakistan-China economic corridor. And the connectivity is through Afghanistan to Central Asia. So do you think that post this peace process, when this peace process is concluded, the provinces, the Balkh province can ask the Kabul government to connect through CPEC with Pakistan and Central Asia? I think we are already, this time we are connected to Peshawar, and during the days we see a lot of trucks come from Peshawar and they are passing the Afghan border to Uzbekistan. If we get the peace and stability, the transit route will be increased. And also we are benefiting from our geographical territory, from the Pakistan transit goods to Central Asia. At the same time, we are playing a role as a transit hub from Central Asia to Pakistan. थैंक यू सो मच गवर्नर साहब. आज का जो प्रोग्राम है उसमें हमने अफ़गान अमन अमल के हवाले से बात की. ये जो अमन अमल है ये अफ़गानिस्तान के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और अभी इस अमन अमल के साथ बहुत सारी तवक्कुआत हैं, बहुत सारी उम्मीदें हैं जो इसके साथ जो है वो जुड़ी हुई हैं. पहले भी बहुत कोशिशें हो चुकी हैं यहाँ पर, कई मरतबा मुज़ाकरात, जंग, हर तरह से जो है वो कोशिश की जा चुकी है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो जंग है जो कई दहाइयों से चल रही है वो ख़त्म हो. अब एक मरतबा फिर से जो है वो ये अमन अमल जो है वो जारी है और इससे तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने बहुत सारी उम्मीदें लगा ली हैं. ख़ास तौर पर पाकिस्तान के किरदार के हवाले से यहाँ पर पहले भी बहुत बात होती रही है, अभी इस मरतबा भी जो है वो बहुत ज़्यादा बात हो रही है क्योंकि पाकिस्तान को एक मेजर स्टेक होल्डर जो है वो इस सारे अमन अमल के अंदर जो है वो समझा जाता है. लेकिन पाकिस्तान के हवाले से ये बात भी अहम है कि पाकिस्तान का जो किरदार है वो सिर्फ इस अमन अमल को मुकम्मल कर देने से जो है वो ख़त्म नहीं होगा. इसके बाद भी पाकिस्तान का जो है वो किरदार रहेगा क्योंकि अफ़गानिस्तान जो है ये पाकिस्तान का हमसाया मुल्क है. आप अपने दोस्त बदल सकते हैं, जो है वो जो लोग आपसे दूर हैं उनके हवाले से कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमसाया जो होता है वो वहीं पर रहता है. तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान जो है वो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हैं और पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ा वाज़ेह पैगाम गया है इस अमन अमल के हवाले से कि एक तो ये कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो भी आए, पाकिस्तान जो है वो अफ़गानिस्तान के अंदर अमन की, स्टेबिलिटी की, अफ़गानिस्तान के अंदर इस सारे अमल को जो है वो चलाने की, इसकी जो है वो पूरी तरह से जो है वो हिमायत करता है. और दूसरा, पाकिस्तान के जो अवाम है वो अफ़गान अवाम के साथ खड़े हैं. जो भी पाकिस्तान के हवाले से यहाँ पर जो है मनफी राय अफ़गानिस्तान के अंदर चाहे वो सियासी बयानबाजी में नज़र आती है या वैसे नज़र आती है, वो भी हमने देखा कि कुछ यहाँ पर जो है वो कम हुई है और पाकिस्तान को भी ये उम्मीद है कि वो आइंदा भी इसी तरह से रहेगा. और ये जो हर चीज़ का मलबा जो है वो पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान पर डाल दिया जाता था, अब पाकिस्तान को जो है वो समझा जा रहा है कि अफ़गानिस्तान के अंदर कोई अगर अमन लेकर आ सकता है तो वो पाकिस्तान जो है वो लेकर आ सकता है. इस अमन अमल के हवाले से आज के प्रोग्राम से इतना ही. बहुत सारी उम्मीदें और तवक्कुआत जो है वो जुड़ी हुई हैं लेकिन ख़दशात भी बहुत सारे हैं. अब देखिए इस मरतबा जो कोशिश हो रही है, जो अफ़गान लोग, अफ़गान सियासतदान और दुनिया के जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं वो मिलकर जो है वो काम कर रहे हैं, क्या वो अमन अमल कामयाब होता है या नहीं. मेज़बान रहमान अज़हर को अफ़गानिस्तान से इजाज़त दीजिए. अल्लाह ने के बाद.